हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिंग क्या होता है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कैंसलेशन लॉ ऑफ एडिशन। सो हियर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, दैट इंप्लाइज बी इक्वल टू सी, व्हिच इज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ ऑफ एडिशन। एंड इफ बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, दैट इंप्लाइज बी इक्वल टू सी, व्हिच इज राइट कैंसलेशन लॉ ऑफ एडिशन। Let a plus b equal to a plus c, and here a belongs to this ring, so here minus a also belongs to this ring. By definition of ring, if we add minus a in the left side of this equation, we get minus a plus b equal to minus a plus c. So here these elements are belongs to this ring, that's why it satisfies associative property under addition. So that implies your minus a plus a equal to 0 plus b, and this is equal to 0 plus c. And here 0 is the additive identity, so here we get b equal to c. Similarly, you can prove right cancellation law of addition. In the second theorem, which is rules of multiplication, let R be a ring and a, b and c belongs to the ring. Then the following hold. In first property, a into 0 or 0 into a equal to 0. And in second property, a into minus b or minus a into b equal to minus ab. And in third property, minus a into minus b equal to ab. And in fourth property, which is distributive over subtraction, which is a into b minus c equal to ab minus ac. And in fifth property, b minus c into a equal to ba minus ca. And furthermore, if R is a ring with unity, that means it has a unity element 1, which is multiplicative identity. So here minus 1 into a equal to minus a, and in seventh property minus 1 into minus 1 equal to 1. तो यहाँ पर देखो, to prove the first property we can write 0 plus a into 0 equal to a into 0, क्योंकि यहाँ पर 0 जो होता है ये additive identity होता है. So this is equal to a into 0 plus 0, क्योंकि हम 0 को ऐसे लिख सकते हैं 0 plus 0. So this is equal to a into 0 plus a into 0 by distributive property of ring. So here we get 0 plus a into 0 equal to a into 0 plus a into 0. So by right cancellation law ये दोनों जो है cancel out हो जाएंगे. So that implies 0 equal to a0. That implies a into 0 equal to 0. Similarly, you can prove 0 into a equal to 0. Similarly, to prove the second property, you can write a into b plus a into minus b equal to a whole into b plus minus b by distributive law. And here this is equal to a into b plus minus b जो होगा, यहाँ पर minus b जो है b का additive inverse है, so this is equal to 0. And here a into 0 equal to 0 by property 1. And here we can write 0 as a ab plus minus ab. So this implies ab plus a into minus b equal to ab plus minus ab. So by left cancellation law ये ab cancel out हो जाएगा. So this implies a into minus b equal to minus ab. Next, to prove the third property, so here minus a into minus b. So here we can write by property 2, minus a into minus b can be written as minus a into minus b. Again by property 2 ये हो जाएगा minus a into b. So this is equal to ab. And to prove property 4, here we can write a into b minus c equal to a into b plus minus c by definition of ring. And again this is equal to a into b plus a into minus c by distributive law. So here this is equal to a into b plus a into minus c जो होगा यहाँ पर ये हो जाएगा minus a into c by property 2.
So here this is equal to AB minus AC. So here we get A into B minus C equal to AB minus AC. Similarly, आप फिफ्थ प्रॉपर्टी खुद से प्रूव कर सकते हैं. And to prove sixth property of this theorem, so here minus 1 into A equal to, we can write it as minus whole into 1 into A by property 2. And here 1 is the multiplicative identity, so this is equal to minus A. Similarly, to prove seventh property, minus 1 into minus 1 जो यहाँ पर होगा, तो by property 3 of this theorem, this is equal to 1 into 1. So this is equal to 1. Next जो है, in theorem number 3, the property is uniqueness of unity and inverse. So let R be a ring, then the following statement hold. If R has a unity, then it's unique. And if an element of a ring has a multiplicative inverse, then that inverse is unique. तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये यूनिक है, एंड किसी भी एलिमेंट का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये यूनिक होगा. लेट फर्स्ट प्रूव करते हैं यूनिकनेस ऑफ यूनिटी. सपोज देयर आर टू डिफरेंट यूनिटी x एंड y. सिंस x is unity, then for all r belongs to r, then x into r or r into x equal to r. Similarly, y also unity, so here y into r or r into y equal to r. Since here x is unity, then we can write x into y equal to y. And similarly, since here y is unity, then we can write x into y equal to x. So from these two equations, we can write x equal to y. Similarly, to check uniqueness of inverse, let हम assume कर लेते हैं there is r belongs to r and there are two distinct inverse of this r, which is x and y. तो यहाँ पर since x is inverse of r, we can write r into x or x into r equal to 1. Similarly, here also y is inverse of r, so here we can write r into y or y into r equal to 1. So from these two equations, we can write x into r equal to 1 equal to y into r. So from this equation, if we multiply both sides by x, so this is equal to x into r into x equal to y into r into x. So here r into x equal to 1, this is equal to x into 1 equal to y into 1. So here 1 is multiplicative identity, so this is equal to x equal to y. So here inverse of a element is unique. तो इसके ऊपर पेस्ट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इन प्रॉब्लम नंबर 1, इफ a एंड b बिलोंग्स टू r वेयर r इज ए रिंग, सो दैट a प्लस b का जो होल स्क्वायर होगा दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर, वेयर x स्क्वायर मीन्स 2 टाइम ऑपरेशन ऑफ x. सो हियर a प्लस b का जो होल स्क्वायर होगा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a प्लस b, 2 टाइम ऑपरेशन ऑफ a प्लस b. सो दिस इज इक्वल टू a इंटू a प्लस b plus b into a plus b by distributive property of ring. Again, by distributive property of ring, this is equal to a into a plus a into b plus this is equal to b into a plus b into b. So here this is equal to a square plus ab plus ba plus b square. Next, in problem number 2, suppose that R is a ring such that a square equal to a for all a belongs to R. That means this ring is a Boolean ring, so that R is commutative. So here let a and b belongs to R, and here all the element of R satisfy this property a square equal to a. So here we can write a square equal to a and b square equal to b. Similarly, here we can also write a plus b का जो whole square होगा this is equal to a plus b. क्योंकि यहाँ पर a plus b also belongs to R. So here we can write a plus b equal to a plus b का whole square. तो अभी हमने देखा इन प्रॉब्लम नंबर 1 a plus b का जो whole square होता है this is equal to a square plus ab plus ba plus b square which is equal to, तो यहाँ पर a square equal to a plus ab plus ba plus यहाँ पर b square equal to b. तो यहाँ पर देखो a जो है लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर बाय लेफ्ट कैंसलेशन लो, तो यहाँ पर a कैंसिल आउट हो जाएगा एंड b यहाँ पर राइट साइड में है, तो बाय राइट कैंसलेशन लो a b कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस इंप्लाइज 0 इक्वल टू ab प्लस ba. एंड इन दिस इक्वेशन इफ वी मल्टीप्लाई a विथ द राइट साइड we get
0 into a equal to ABA plus BA square, that implies, तो यहाँ पर by theorem number 1 0 into a जो होगा this is equal to 0 which is equal to ABA plus BA square जो है यहाँ पर a square equal to a, तो यहाँ पर this is equal to BA. Similarly, if we multiply a in left side of this equation, so this is equal to a into 0 equal to a square into b plus ABA. That implies, similarly यहाँ पर a into 0 जो है ये हो जाएगा 0 which is equal to a square यहाँ पर हो जाएगा a AB plus ABA. Let this is denoted as equation 2 and this is denoted as equation 3. एंड यहाँ पर ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है यूनिक होगा. सो यहाँ पर बाय इक्वेशन 2 and 3 दिस इज इक्वल टू ए बी ए प्लस बी ए इक्वल टू ए बी प्लस ए बी ए. तो यहाँ पर रिंग जो होता है ये कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी ए प्लस बी ए इक्वल टू ए बी ए प्लस ए बी. तो यहाँ पर देखो बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पर ए बी ए कैंसल आउट हो जाएगा. दिस इज इम्प्लाइज बी ए इक्वल टू ए बी. तो यहाँ पर ए एंड बी जो है आर्बिटरी है, तो यहाँ पर बी ए इक्वल टू ए बी होगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर. सो हियर द रिंग इज कॉम्यूटेटिव. नेक्स्ट इन प्रॉब्लम नंबर 3, शो दैट द यूनिटी ऑफ ए रिंग डिवाइड्स एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग. तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट ए बी ए यूनिट ऑफ रिंग. तो यहाँ पर a अगर यूनिट होगा दैट मीन्स a का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये इस रिंग R के अंदर एग्जिस्ट करेगा. सो हियर a इनवर्स बिलोंग्स टू दिस रिंग R एंड लेट आर्बिट्ररीली चूज b बिलोंग्स टू R. सो हियर वी कैन राइट b इक्वल टू 1 into p, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है विच इज यूनिटी. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं a into a इनवर्स into b. Since A inverse and B belongs to ring, so by associative property of ring, this can be written as A into A inverse into B. तो यहाँ पर देखो A into A inverse into B equal to B. So here A inverse into B is the quotient. So here A divides B, and here also A inverse divide B. Since B is arbitrary, so here unit divides every element of the ring. Next in problem number 4, show that a ring R is a commutative if it has a property that AB equal to CA, that implies B equal to C whenever A not equal to 0. तो यहाँ पर assume कर लेते हैं let this property is satisfied, that means for A, B and C belongs to a ring R, then if AB equal to CA, that implies B equal to C. So here we can write ABA equal to ABA. Since these elements are belongs to this ring, so this satisfies associative property. So here we can write it as A into BA equal to AB into A. Then by this property, this is equal to BA into AB, क्योंकि यहाँ पर A जो है cancel out हो जाएगा. And here A and B are arbitrary. So here for all A and B belongs to R, BA equal to AB. So it satisfies commutative property. So this ring is commutative. So a ring is commutative if it satisfies this property AB equal to CA, that implies B equal to C whenever A not equal to 0. I hope ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना.